Hello everyone, I am Dharmendra Singh from English Probe. Once again, I welcome you all on your YouTube channel English Probe with another topic that's very simple, very easy lesson, that is the sermon at Benares. It has been written by Betty Renshaw. So let us, without wasting any time, let us discuss about the important points of the lesson. So if we talk about the lesson, we find that Gautam Buddha was born as a prince. He was named as Siddhartha Gautam first of all. He was married at the age of 16 years and enjoyed the royal luxuries for 10 years. He had a son. Up to the age of 25, he was shielded from the sufferings of the world. मीन्स लगभग 25 साल की एज तक उनको जो है दुनिया के जितने भी कष्ट हैं, कोई भी तकलीफ़ें हैं, उन सब से उनको दूर रखा गया था. सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस लाइफ ही उन्होंने अब तक जी थी. द साइट ऑफ अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, अ फनरल प्रोसेसन एंड अ बेगिंग मॉन्क सॉक्ड हिम. लेकिन एक दिन उनको बाई चांस बाहर जाने के लिए मिलता है, तब उनको ये सारे सीन देखने को मिलते हैं. आफ्टर लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स ही वॉज शॉक्ड. ही गेव अप रॉयल प्लेजर्स एंड सेट आउट टू सीक एनलाइटनमेंट. इतना शॉक्ड हो गए, इतना उनका मन जो है विचलित हो गया कि उन्होंने जितना भी रॉयल प्लेजर था, मतलब अपना राजपाट सब छोड़ दिया. एंड ही सेट आउट इन द सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. He wandered for 7 years and finally sat down under a big tree in meditation just in search of enlightenment. Enlightenment came to him after 7 days. He was known as Buddha. जब उनको enlightenment की प्राप्ति हो गई, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उनका नाम रख दिया गया बुद्धा और the awakened or the enlightened one. Buddha means an awakened person or an enlightened person. The Buddha preached his first sermon at the holy city of Benares on the river Ganges. रिवर गंगा के किनारे उन्होंने जो है बनारस शहर में अपना सबसे पहला उन्होंने उपदेश दिया था. किसा गौतमी, अकॉर्डिंग टू द लेसन, वन इंसिडेंट हैज बीन शेयर्ड फ्रॉम गौतम बुद्धा's life, that character Kisa Gautami, she had only son and he had died. She lost her senses on the death of her only child and carried the dead boy to all her neighbors. She asked them for medicines to cure him. वो इतना ज़्यादा सेंसेस उसके ख़त्म हो गए कि उसको रियलिटी जो लाइफ की है वो भूल गई कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल एंड एवरीवन whosoever has born has to die. So she just went from door to door in her neighborhood just asking for the medicines to cure her child. The Buddha asked Kisa Gautami, when she went to Gautam Buddha, then Mahatma Buddha, Gautam Buddha asked Kisa Gautami to bring a handful of mustard seeds, but there were condition. How to bring those mustard seeds? Finding a house where no one had died. But what happened? She could not find any, but she could not find such a house where nobody had died. Then when she didn't find any house, and that Gautam Buddha really wanted to teach her, but because he know that he won't understand his preachings, so that is why he tried to teach her a lesson in that way by sending her to bring some mustard seeds. Mustard seeds was just कह सकते हैं एक बहाना था, बल्कि उनको रियलिटी से उसको जो है रूबरू कराना था. सो दैट इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, टू सेंड किसा गौतमी फ्रॉम हाउस टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड. बट because this was not possible to find any house, because death is common to all. ऐसा कोई घर ही नहीं मिलेगा जहाँ कोई न कोई किसी न किसी की डेथ न हुई हो. So finally she realized that she was selfish in her grief, as death is common to all. So this is all about the lesson. Now let's try to understand some important question answers of the lesson. In the series of these important question answers, the first question comes to my mind. It is, why did
प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ बेगर. इतना लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, इतना शान शौकत से जी रहे थे, फिर भी उन्होंने अपना महल, अपना पैलेस क्यों छोड़ दिया और बेगर के जैसी लाइफ वो जीने लगे. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड्स in previous years, so I thought to introduce this question in this series. So how to answer this question? Let us see. Once Prince Siddhartha, while out hunting, जब वो हंटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, आउटिंग कह सकते हो उनकी, so he saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, वही जो अंतिम संस्कार होता है डेड बॉडी का, वो देखा उन्होंने, and finally a monk that was a kind of beggar begging for alms. So these sights, these scenes moved him very much. इन scenes को देखने के बाद वो अंदर से एकदम बहुत ज़्यादा मूव हो गए concerning the sorrows he had witnessed, जो उन्होंने इतने सारे लोगों के दुख देखे. इन चीज़ों को अपने कंसर्न में लेते हुए he left the palace and became a beggar. Why? To search for enlightenment. आखिर इन दुखों का कारण क्या है? So इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए he left the palace and started living a life as a beggar. So this is what you can write the answer for this question. Let us see another question. How did Kissa Gotami realize that life and death is a process? Means अगर जिसको लाइफ मिली है उसको डेथ भी आना जरूरी है. This is a process, natural process to human beings. So how did Kissa Gotami realize it? So अभी हम लोगों ने बात की थी, महात्मा बुद्ध ने उनको, किस्सा गौतमी को, एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए भेजा था, एंड दैट वाज जस्ट फॉर टू मेक हर रियलाइज this fact of life that is common to all. So we have to write the answer like that. Kissa Gotami went from house to house but was unable to find a single house where nobody had died, because death is common to all. तो ऐसे कोई फैमिली हो ही नहीं सकती जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो. Being tired and hopeless, she sat down at the wayside watching at the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. मतलब वो थक करके रोड साइड पे बैठ जाती है, सिटी की लाइट्स को देखती है, कभी कभी वो जलती हैं फिर बुझ जाती हैं. देन शी रियलाइज दैट द सेम एज सिटी लाइट्स, human lives also flicker up for some time and are extinguished again. बिल्कुल उन लाइट्स के जैसे ही ह्यूमन लाइफ भी है. she correlated that flickering up of lights with the human lives, कि बिल्कुल उन्हीं के जैसे हमारी लाइफ भी है जो कुछ दिन तक जलती रहती है, उसके बाद फिर वो बुझ जाती है. so she realized the fact of life of human beings in such a way. So this is what you can write as a better answer for this question. Let's see another question. According to Kissa Gotami, what is the greatest grief of life? किस्सा गौतमी ने जब रियलाइज किया द फैक्ट ऑफ लाइफ, सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू हर? उसने क्या रियलाइज किया कि जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? सो लेट अस फाइंड दिस आंसर. टू राइट दिस आंसर, According to Kissa Gotami, the greatest grief in life is death of one's loved ones. सबसे बड़ा दुख है लाइफ का किसी अपने बहुत ही प्रिय व्यक्ति की डेथ होना, और ऊपर से एंड वंस इनएबिलिटी टू स्टॉप देम फ्रॉम डाइंग. और हमारे सामने ही हमारा कोई प्रिय व्यक्ति जो है डेथ से मिल रहा होता है और हम मतलब जो है अनेबल होते हैं उसको मरने से रोकने के लिए, बिकॉज दिस कैन नॉट बी, डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड. सो दिस इनएबिलिटी is the greatest grief in life. Therefore the Buddha says that instead of lamenting on it, और इसी वजह से गौतम बुद्ध अपने preachings में ये बताते हैं कि instead of lamenting and instead of weeping on it, the wise should not grieve. इस पे रोना नहीं चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, because this is common. Weeping will only increase the pain and disturb the peace of mind, because weeping से, रोने से, दुख मनाने से डेथ अवॉइड नहीं हो सकती है. इट विल ओनली इंक्रीज द पेन एंड पीस ऑफ माइंड विल बी डिस्टर्ब. सो दिस इज व्हाट किस्सा गौतमी रियलाइज्ड अबाउट द ग्रीफ इन लाइफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन talk about some value based questions and their answers in next series. Question will be like this: life is full of trials and tribulations.
कि जो लाइफ है बहुत सारे परीक्षाओं से भरी हुई है, कह सकते हो। बहुत सारे हमें परीक्षाएं देनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, दुख सहन करने पड़ते हैं। सो किसा गौतमी आल्सो पासेस थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रीफ इन हर लाइफ। हाउ डज शी बिहेव इन दोज सर्कमस्टेंसेस। सो किसा गौतमी जब अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में भी इसी टाइप का दुख आता है, तो उस परीक्षा की घड़ी में हाउ डज शी बिहेव। सो सबसे बड़ा जो वैल्यू है लेसन का, दैट इज लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। कि लाइफ जो है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन से भरी हुई है, ये एक वैल्यू है इस क्वेश्चन की। और इसी वैल्यू को हम अगर किस्सा गौतमी की लाइफ से कनेक्ट करें, सो हाउ डज शी बिहेव, बिकॉज शी आल्सो passed through that trial and tribulation. So let us answer this question in this way. After the death of Kisa Gautami's only child, she became very sad, as we had noticed in the lesson. She became very sad and she carried her dead child to her neighbors in order to get medicine to bring him back to life. कि लेकर के अपने सन को अपने नेबरहुड में इधर से उधर भागने लगी कि कोई न कोई उसको मेडिसिन ऐसी मिल जाए, शायद वो जीवित हो जाए. But her neighbors thought that she had gone insane. Insane is mad. Her neighbors thought that she had got mad as she was unable to accept the fact of life. What is the fact of life? That is, death is the final truth of life. So, but she was unable to accept it. So that is what made the neighbors realize or feel that she had got mad. It was then that someone suggested her to meet Gautam Buddha. When she met Gautam Buddha, he gave her an exercise to do. और आपको पता है वो कौन सी स्ट्रेंज एक्सरसाइज उन्होंने दी थी करने के लिए. He asked her to collect a handful of mustard seeds from a house where no one had ever died. That was impossible, you know. She went from one house to another but was unable to find a single house where no one had died. So this way she realized that death is a part of life and anyone who is born is bound to die one day. कि जो जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन डेथ से मिलना ही है. Thus Buddha changed her understanding of death by this strange exercise. और यही एक तरीका था जिससे easily उसको समझाया जा सकता था truth of life. So this is what she behaved in such a way and finally understood the fact of life, that death is common to everyone. One more question we will have as value based question, and the value is personal losses are a part and parcel of life. जो हमारे अपने पर्सनल नुकसान होते हैं लाइफ में, बहुत सारे नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं, they are the part and parcel of life. Instead of wailing on them, उन पर रोने के बजाय we should move on in life. आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में. This message of Gautam Buddha has become more relevant in modern times. आज के टाइम में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया यह मैसेज बहुत ही रिलेवेंट, एकदम फिट बैठता है आज के टाइम में. डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हो सकता है कुछ लोग एग्री करेंगे भी, कुछ नहीं करेंगे. सो इफ यू एग्री, सो वाई? इफ यू डोंट एग्री, वाई नॉट? सो in my case, I totally agree with this message of Gautam Buddha, that instead of wailing on personal losses of life, we should move on in life. So let us see if we agree what we can write. Yes, I agree with the message that Gautam Buddha has given about life, that personal losses are a part and parcel of life. Instead of wailing on them, we should move on in life. In the modern times, अगर हम modern times की बात करें, people have a lot to explore and move with the world as the same pace. Pace is the speed. If people don't understand the reality of life, they will be under stress, which would in turn affect their personal and professional lives. अगर वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं, रियलिटी जो लाइफ की रियलिटी है उसको नहीं रियलाइज करते हैं और स्ट्रेस में, दुख में ऐसे ही रहते हैं, तो क्या होगा कि उनके पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर को, उनकी लाइफ को पूरी तरीके से ये चीज़ अफेक्ट करेगी. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हु इज बोर्न विल हैव टू डाई वन डे. सो देयर इज नो यूज ऑफ बीइंग सैड और क्राइंग ओवर द लॉस. सो जब हमें पता ही है एवरीवन हैज टू डाई वन डे, सो व्हाई टू lose our time, why to cry over the loss when this is the fact of life? So the Buddha himself says that the wise don't grieve
बुद्धा ने प्रीचिंग्स में अपने कहा है कि वाइज पीपल कभी दुख नहीं मनाते हैं नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, क्योंकि उनको वर्ड के सारे टर्म्स पता होते हैं, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ और वर्ड में क्या होना है। ये तो जो पॉसिबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इट विल हैपन श्योरली। सो इफ वी नो दिस विल श्योरली हैपन, व्हाई टू ग्रीव ओवर इट? देयरफॉर पीपल शुड रिमेन काम एंड कंपोज्ड इन सच सिचुएशंस। दे शुड फेस द ट्रुथ and move on in life. This is the message of Buddha, and really this proves accurate in the modern times. So I agree with the value which we are talking about in this answer. So this is what we feel. You must understand to write the answers. They are very easy if you understand. The lesson is not very difficult. So finally, one request to everyone, that still if you are not subscribed this channel, please subscribe it, like the videos and keep sharing among your classmates so that they may be benefited. Thank you very much and have a nice time. Thank you.